Okay, see here once again. Question number 5th E. Listen to me. Question 5th E. What is here? Starting from her house, Nita walks 160 meter north and then 630 meter west to reach friend's home. Okay, friend's house. On her way back, she walks diagonally until she reaches her own house. So what distance did she walk while coming back? Okay, so what Nita did? Okay, suppose this is Nita's home and Nita walks 630 meter north, 630 meter. Okay, again she went to reach friend's house. Okay, what is here? Nita walks 160 meter north, 160 meter north. 160 meter north and west how many? 630 meter. 630 meter. This is the base. Now she wants to come back. Okay, come back diagonally like this. This is the route. So you have to find what is the distance. This one, this distance you have to find. If you observe this is the right angle triangle. This is 90 degree. So in this triangle, this is the hypotenuse. This is one side, this is another side, and this is the hypotenuse. Means you have to find the hypotenuse. Okay, by using Pythagoras theorem. By using Pythagoras theorem. So you can write here suppose north, west. Suppose this is south. Okay, in place of ABC, you have to use that numbers also. So you can write here by Pythagoras theorem. Okay, so SW square. SW means hypotenuse. So hypotenuse square equal to. So you can write one side square plus other side square. This is not 0.5 side, one side, other side. Okay, so one side means suppose this is 160 square plus 630 square. What is the square of 16? You know that one, 256, and put 2 zeros plus 630. What is the square of 63? Can you tell me? The square of 63 is what? Try to find out what is the square of 63, that is 396900. You find the square 396900. You have to add these two numbers. So what you can give here? 396900 and 256 0099. 422500. Okay, so you can get here 422500. So this is hypotenuse square. You have to find the hypotenuse is equal to square root of this 422500. Can you find the square root of this number by using which method? Division method. By using division method, you can easily find the square root of this one. You cannot take more time for finding the square root of this number. So what you can get here? You can get 650. That is 650 meter. So in this you can get the answer. Okay, write down. Now the last problem, last problem. See here, F. Question number F. Sharon has a piece of cloth of area 170 centimeter square. Can she make a square handkerchief out of it with length of each side as 12.5 centimeter square? Okay. What do you have to find here? See here. Question number 5F. Okay. Sharon has a piece of cloth having area is 170 centimeters square. Okay. Area of cloth is equal to 170 centimeters square. Centimeter? Yes, 170 centimeters square. Okay, she wants to make a small handkerchief, square handkerchief. Okay, having each side of that handkerchief is 12.5 centimeters square. Okay, side of is equal to how many? 12.5 centimeter. 12.5 centimeter. So area of cloth is this one. What is the area of this one? That we have to find.
Okay, what is given here? Can she make a square handkerchief out of it with the length of each side of is 12.5 centimeter? तो इसके इतने एरिया में से इतने एरिया के कुछ हैंकरचीफ क्या वो बना सकती है? So first you have to find the area of this one. Suppose its area is less than this area, means she can make the handkerchief. But suppose its area is greater than this one. अगर ये एरिया ज़्यादा आया तो ये एरिया में से इतना एरिया कवर नहीं हो सकता, मतलब हैंकरचीफ को नहीं बना सकते. तो ये इससे कम अगर आता है, so you can write yes. So area of handkerchief is equal to side into side. So 12.5 into 12.5. So what you can get? Find out the answer. 12.5 to 12.5. What you can get? 156.25. 156.25 square centimeter. So this area is less than this one. So 156.25 is less than 170. इससे एरिया कम है, मतलब ये बना सकती है. So you can write here, yes, she can make the handkerchief. She can make the handkerchief. Okay, so like this you can write the answer. Write down. Now the last question. See here. Very simple question. Over. Reading what you have to do there. Some numbers are given there and you have to find without any calculation square root of that numbers. One of the hint is given there. That hint is what? Listen here. Estimate the square root of each of the following numbers by looking at the unit digit and the pair of numbers which form a hundreds and thousand places. मीन्स क्या करना है आपको? यूनिट डिजिट देखना है. फॉर एग्जांपल जैसे 2916. फर्स्ट प्रॉब्लम इज गिवन 2916. यू हैव टू फाइंड आउट द स्क्वायर रूट ऑफ दिस. ओके, सो क्या करना है आपको? 2916 आप यूनिट डिजिट या फिर ये दो डिजिट देखिए. ये किसी का स्क्वायर है. सो 16 इज द स्क्वायर ऑफ व्हिच वन? 4. 16 मींस 4 into 4. 16 मींस 4 into 4. ये सिर्फ 4 का स्क्वायर है, मतलब यहाँ पे 4 आने वाला है. एक और नंबर आएगा सामने, तो कौन सा नंबर आता? 29. यहाँ नंबर दिया 29. इट इज स्क्वायर ऑफ एनी नंबर. दिस इज नॉट द स्क्वायर नंबर, बट इट इज नियरेस्ट टू व्हिच नंबर? 29 is nearest to the which number? 5 square means 5 into 5, that is 25. इसका नेक्स्ट नंबर आता है 6 square. 6 into 6, that is 36. Okay, so this 29 is between 25 and 36. Here 29. So 29 is in between 25 and 36. Okay, let's listen here. So 29 is in between 25 and 36. Okay, this is nearest to which number? 25. 25 किसका स्क्वायर है? 5 का. मतलब ये 4 का स्क्वायर है और यहाँ पे आएगा 5 का. 5 आएगा, मतलब यहाँ पे 4 और यहाँ पे 5. So you can write here 25 is the square of 5. Means your number is what? यहाँ 5 का स्क्वायर है और बीच में 29, यहाँ 6 का स्क्वायर. So this is nearest to this number. Means you can write, so square root of 2916 is equal to 4 और यहाँ पे आएगा 5. Means 54. Understood? क्या करना है? First you have to find out the last ones place or this tens place. This is the square number. ये किसका स्क्वायर है? फाइंड करो. 4 का स्क्वायर है, इसलिए मैंने 4 लिखा. ओके, सेकंड थिंग इज व्हाट? 29. 29 इस नंबर के स्क्वायर के नियरेस्ट है. तो 5 स्क्वायर 25 एंड 6 स्क्वायर 36. इन दोनों के बीच में 29 है, तो नियरेस्ट नंबर है 25. तो 25 किसका स्क्वायर है? 5 का. तो यहाँ पे लिखना है 5, यहाँ लिखना है 4, मतलब 54 का ये स्क्वायर हो गया. ओके, सेकंड नंबर दैट इज 3844. 3844. सी हियर क्वेश्चन बी 3844. अब यहाँ ये दो कंसीडर करते हैं तो 44
स्क्वायर नंबर, बट इफ यू कंसीडर सपोज 4, so 4 means 2 into 2, मतलब लास्ट में 2 आने वाला है। ओके, आपका एक नंबर 2 बन गया। अब आप ये दो नंबर छोड़ दो, इसको देखो आप 38 देख रहे हैं, मैंने भले इसका निकाला स्क्वायर रूट, लेकिन आप ये दो छोड़कर नंबर, ये दो को कंसीडर करना है, क्योंकि वहां लिखा है, क्या लिखा है, पेयर ऑफ नंबर्स व्हिच फॉर्म हंड्रेड्स एंड थाउजेंड प्लेस, तो ये 100 और 1000 प्लेस सही है, इसलिए ये दो लेना है आपको। 38, अब 38 किसके नियरेस्ट में है, 6 स्क्वायर 36 होता है एंड 7 स्क्वायर 49 होता है, इनके बीच में है 38, किसके नियरेस्ट में है, 36 के नियरेस्ट में 38, इसका स्क्वायर रूट 6 है, मतलब यहाँ 6 चाहिए, द स्क्वायर रूट ऑफ 3844 is equal to 62, like this you can find. Okay, now 9025, ये भी आप वैसा ही कर सकते हो। 144 is the having square root is 12, you know very well। 676 का आपको फाइंड करना है, और लास्ट में आप इजीली फाइंड कर सकते हो। अगर लास्ट में 25 है तो वो इजीली आप उसका स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हो। ओके, so suppose write down this, suppose you have any doubts you can ask me on my personal WhatsApp number। Okay, so in this way this topic is completed over this topic, and the next topic that is cube and cube roots। क्यूब एंड क्यूब रूट्स, तो क्यूब एंड क्यूब रूट्स के लिए आपको 20 तक या मिनिमम 10 तक उसके क्यूब और क्यूब रूट लिख के रखो आप अपने बुक में, उसे लर्न भी करो। ओके, थैंक यू।